Hey guys, hello. So yeah, we'll be starting in the stream in a couple of minutes, probably in just 2 minutes, uh, to be honest. So I think you must have received the mail on your college email ID. Even WhatsApp messages have been. Oh wow, of course, favorite streamer. Come on, Advait, come on. All right, so yeah, you must have received the mails on your college ID. Even the WhatsApp messages have been circulated, and yeah, I'll be going through the whole event. I'll be giving you the crux of it. What do you have to do? How do you have to do it? All the specific rules. They're not rules that like they're not very complex rules. They're very simple rules that you have to follow. And yeah, we'll start like in give me 1 minute. I'll just get the presentation and everything ready, and we'll be starting. So anyway, I think you guys have seen the mail. So if you have any questions about it, you can put it down in the chat, and I'll be reading it as soon as I can get my eye on it, and I'll be answering it according to the rules that we have created. So I think we can begin the presentation. Oh, hi guys. Hello, hi. Don't. The black screen doesn't look cool. Where did my? Yeah. So I think we can begin it. So the event is called WebWeave. So the event is actually a very cool event. Basically, all you have to do is to create a website. It's a very simple challenge. You have to create a website, and it's gonna be completely online. I don't think it's sent out. Give me one sec. Yeah. So the challenge is very simple. You have to just create a very front end website, and ये क्या हो रहा है? You need to create a front end website, and the theme for the website is the website has to be developed for GDSE SIT. So if you don't know what GDSE is, it's Google Development Students Club, and basically we need a landing page or some kind of a home page for us, and instead of developing it us, we are trying to crowdsource it, and we are doing it through a competition. And why are we actually going through a competition? There are several reasons technically, and we'll be revealing it through prizes. So basically the prizes are good. So the first place, you're going to get the lead position in the JDSE SIT web development track plus a cash prize of 1500. The second place and the third place will be given the co-lead positions with a cash prize of 1000 and 500 respectively. So like I said, you need to develop just the front end website. Backend is not there, you don't even have to host it. Just need to develop a very awesome website, and we'll be judging them. The timeline is very simple. Right now, at 6 p.m. the stream started. Since then, the event has been started. I don't know if you're hoping for the event has begun or something like that, but yeah, the event has been started. So this is the introductory session. Basically, you're gonna get a video of this on the mail as well, so you can check that out. So introductory session will start at 29 Feb 6 p.m., which is already in the past right now. So the registration forms have been sent to you. You can just fill them up, and basically you can start developing your website. So the submissions form will be circulated to you on 4th of March. And why 4th of March? Because we want to give you some time before the submission starts, so you can develop the website the way you like it. There's not going to be pressure. As soon as the submission forms start, you can start filling in the final submissions, but make sure you only fill it when you're satisfied with it. The form will be open only to fill once. The form will be closing on 7th March 11:59 p.m. and we have given you a week's time with a weekend in the middle.
You can develop small parts of it. You can develop it the way you want. You can use any kind of frameworks. I'll be getting to the rules in the next slides. But yeah, you're gonna be getting 7 days, and 1 day is going to be reserved for code review. The code review is going to be done by the track leads. So basically, we'll be seeing your GitHub submissions. You have to submit your public GitHub repository. We'll be going through your code to check, because some points are going to be there for scalability and how the code is structured and all. And the whole thing is going to be online. So you don't have to be anywhere. You can develop it at your own pace, but 7 days is the deadline. And on the 8th day, we'll be basically reviewing your code. And on the last day, that is 9th March, all of you will be called offline. That is Saturday. 9th March is Saturday. So all of you will be called offline, and an external judge is going to come. He's going to check the website, and he's only going to rate your front end. All right, so depends on how beautiful your front end is. You may get more points, and there will be 6 criteria plus 1 judge's criteria that he's going to decide on spot. And yeah, that's it. If you have any more questions about this, you can ask it on the live stream. So resources, as I know, like basically किसी के लिए भी website develop करना होता है, तो you're gonna require some kind of a materials of some kind. Okay, so तुम्हें जो मटेरियल लगेगा वो मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड टू यू. तुम्हें एक इवेंट्स का लिस्ट दिया जाएगा, जितने भी इवेंट्स हमने 2023 वगैरह में हमने ये किए हैं ऑर्गेनाइज किए, वो सारे इवेंट्स के आपको लिस्ट मिलेंगे. उसके पिक्चर्स मिलेंगे विद डेट्स एंड इवेंट रिपोर्ट्स. जो भी इवेंट में हुआ था, हम लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं आफ्टर एवरी इवेंट, वो इवेंट वहाँ पे लिखा रहेगा. तुम्हें GDSE का मीडिया किट मिलेगा. व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया किट? सो बेसिकली लोगोज जो भी गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बनाए गए थे, गूगल के अकॉर्डिंगली बनाए गए थे, वो तुम्हें मीडिया किट लोगोज वगैरह दिए रहेंगे. कोर लिस्ट, तुम्हारा जो भी कोर मेंबर्स है उनके लिस्ट एंड पिक्चर्स भी तुम्हें दे दिए जाएंगे. Miran, hi Yash, I'm interested in this challenge. I have a question. If the code base will be public, will not the code be copied by others? So basically उसके लिए भी पब्लिक करना है जब तुम सबमिट कर रहे हो. बेसिकली यू कैन मेक अ रिपोजिटरी, कीप इट प्राइवेट, और यू कैन इवन कीप अ लोकल रिपोजिटरी व्हाइल यू आर डेवलपिंग द कोड. एंड ऑन द लास्ट डे यू कैन बेसिकली पुश इट एज अ पब्लिक रिपोजिटरी, क्योंकि तुम जैसे ही लास्ट डे पे सबमिट करोगे तभी हमें पब्लिक चाहिए. उसके पहले हमें पब्लिक हो ना हो, वी विल नॉट इंटरफियर इन योर, बिकॉज हम लोग तुमसे प्रोग्रेस कभी भी नहीं पूछने वाले. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. तुम सिर्फ लास्ट डे को रिपोजिटरी पब्लिक कर सकते हो. एंड इवन इफ इट्स नॉट पब्लिक, तुमने प्राइवेट रखा हुआ है, विल कॉल यू वंस. अगर तुमने रिपोजिटरी पब्लिक कर दी विद इन द आवर, इट्स गुड, और एल्स यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. वो चीज़ है. तुम्हें अगर पब्लिक करने में कुछ हेल्प लगेगा, बेसिकली तुम्हें जो कुछ भी हेल्प लगेगा कैसे करना है, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, हम लोग हैं, तुम हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ये कर सकते हो. वैसे तुम्हें जो अगर कुछ भी हेल्प लगेगी, यू कैन आस्क द ट्रैक लीड, यू कैन आस्क अस इन द ग्रुप, एंड हम लोग तुम्हें वो चीज़ में हेल्प कर सकते हैं. वी वोंट हेल्प यू इन डायरेक्टली कोडिंग, बट अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह अच्छा कुछ देखना, तो वो कर सकते हैं. what all options or objects are required in the website? So basically it is all up to you. हमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं दे रहे तुम्हें एक लैंडिंग पेज बनाना है. Okay, we'll be giving you references to different GDSE websites which are from SIT, VIT, PICT वगैरह. उनके जो वेबसाइट we'll be giving you references. There is no restrictions on आपको कैसे करना है वो चीज़. जैसे आपको डेवलप करना है, you can develop it the way you want it. Okay, एंड डिपेंड करेगा, बिकॉज हमारा जो क्राइटेरिया होगा जजिंग का, उस पर उसे सब चीज़ हम लोग अभी वो चीज़ तुम लोग, क्योंकि वो कंपटीशन है, तो हम लोग तुम्हें रिक्वायरमेंट्स बता नहीं सकते. वैसे विल बी गिविंग यू द रिक्वायरमेंट्स. तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट जैसे जो भी लैंडिंग पेज होता है यूजुअली GDSE साइट, कम्युनिटी गाइडलाइंस तुम लोग चेक कर सकते हो, उनके जैसे लैंडिंग पेजेस होते हैं, आपको वैसा डेवलप करना है. इट इज़ नॉट कि हमारे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, यही चाहिए. एवरीथिंग इज ओपन टू योर इंटरप्रिटेशन. सो रूल्स जो हमने 6 ही रूल्स रखे हुए हैं, बट वॉट एवर रूल्स आर देयर, दोज हैव टू बी स्ट्रिक्टली फॉलो, बिकॉज द रूल्स आर काइंड ऑफ सिंपल. Eligibility, the competition is only open for SIT students.
सोलो पार्टिसिपेशन है, नो टीम कंपटीशन, देयर इज ईच वन ऑफ यू फॉर योरसेल्फ, कट थ्रोट करो, मस्त लाइक मेक इट अ गुड कंपटीशन गाइस, बिकॉज तुम्हारे पास एक चांस है तुम खुद से वेबसाइट डेवलप कर, वी आर ओनली आस्किंग यू फॉर अ फ्रंट एंड, बैक एंड वगैरह होस्टिंग वगैरह हम लोग करेंगे। सो फ्रंट, मैं जैसे बोला, द वेबसाइट हैज़ टू बी अ फ्रंट एंड वेबसाइट, तुम्हें बैक एंड नहीं देखना है, तुम्हें होस्टिंग नहीं देखना है, जो तुम्हें करना है बस तुम्हें एक अच्छा सा फ्रंट एंड बनाना है, बेसिक। ओके, तुम्हें जितने एनिमेशन जो भी तुम्हें यूज़ करना है वो कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर, तुम्हें जो फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तुम्हें जैसे यूज़ करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, एनी वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इज़ अलाउड। तुम HTML CSS बस यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट HTML CSS यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, फ्लटर, एनीथिंग और एनी फ्रेमवर्क दैट कैन बी होस्टेड ऑन अ वेब, you can use that, but no code tools are not allowed. You cannot use WordPress to create a website, you cannot just show us a flutter represent, sorry, Figma representation of the website, तुम्हें कोड लगेगा उसमें, alright, तुम लोग फ्लटर, you can use view, angular, any kind of a coded website जो तुम्हें, because we need to see the code, कंपटीशन का वी नीड टू सी कीप सम काइंड ऑफ कि एटलीस्ट ये बार को ये होना चाहिए, यू कैन यूज़ एनी बेसिक फ्रेमवर्क एंड इवन इफ इट्स HTML CSS, तुमने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, योर वेबसाइट विल बी क्या बोलते हैं डिप्लॉयड, और सम योर डिज़ाइन और योर वेबसाइट विल बी एक्चुअली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ GDSE SIT, जो तुमने बनाया हुआ है उसमें हल्के से चेंजेस करेंगे और हम लोग ही उसे होस्ट करेंगे, तुम्हें नीचे क्रेडिट दिया जाएगा, क्रिएटेड बाय दिस जो भी जिसने भी ये किया होगा। तीन, लाइक जो तीन बेसिक रूल्स है जो हम लोग कोड रिव्यू जब भी करेंगे, वो हमें जब नोटिस करेंगे तो बेसिकली होगा कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। सो तुम लोग ये HTML CSS में भी यूजुअली कर सकते हो @media क्वेरी के साथ, एंड तुम रिएक्ट वगैरह में तो बहुत आसानी से कर सकते हो, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर वगैरह में तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, बट या यू नीड टू मेक श्योर दैट द वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल डिवाइसेस। तुम एटलीस्ट ट्राई करो कि 720p के ऊपर एंड नीचे का रिविजन कर पाओ, ताकि वो थोड़ा सा तो ये रखता है, बढ़िया, तुम जितना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करोगे, जितना भी वो फास्ट परफॉर्मेंट होगा, उतना तुम्हारे लिए एडवांटेज होगा। दूसरा, सूटेबल फॉर फ्यूचर स्केलेबिलिटी, द वेबसाइट का जो भी कोड लिखा जाएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर GDSE SIT, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर कोड इज सूटेबल कि बाकी लोग उस पर काम कर सके। देयर इज अ टर्म दैट वी यूजुअली थ्रो अंडर द स्पैगेटी कोड, लाइक अगर तुम्हें ये मीम पता है तो लाइक यू कैन सी कि वैसा मत करो, ठीक है। हम लोग लाइक एंड में कोड रिव्यू के लिए जो पॉइंट्स है दैट इज लेस कंपेयर टू जो बाकी जजेस क्राइटेरिया है फ्रंट एंड के लिए, तो वो कम है, बट स्टिल दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। एंड वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पब्लिक गिटहब रिपोजिटरी। इफ़ यू वांट टू कीप योर रिपोजिटरी प्राइवेट एट फर्स्ट, तुम बाद में पब्लिक करना चाहते हो, तुम इजीली वो कर सकते हो, एंड वो भी है। अगर तुम्हें पब वैसे नहीं करना है, यू कैन कीप योर कोड इन योर ऑन योर लोकल मशीन, एंड जस्ट सबमिशन वाले दिन यू कैन क्रिएट अ रिपोजिटरी, मेक इट पब्लिक एंड सबमिट द लिंक टू अस, ठीक है। तुम्हारा सबमिशन फॉर्म, जैसे मैंने बोला 4 मार्च को रिलीज़ होगा सबमिशन फॉर्म, एंड तुम उसके बाद से कभी भी भर सकते हो अंटिल 7 मार्च 11:59 PM। एंड रिपोजिटरी में इफ़ यू कैन ऐड सम इमेजेस, तुम अगर थोड़ा सा उसका जो भी रीडमी होता है, अगर तुम रीडमी में बस इमेजेस डाल सको वेबसाइट के, सम काइंड ऑफ अ थिंग कर सको, तो दैट वुड बी बेटर। एंड वेन एवर यू आर डेवलपिंग अ वेबसाइट, यू कैन एक्चुअली यूज़ अ लोकल सर्वर, लाइक जो लोग भी डेवलप कर रहे होंगे उनको पता होगा कि लोकल सर्वर, आप रिएक्ट का NPM स्टार्ट करते हो, लोकल सर्वर ऐसे ही चालू हो जाता है। HTML CSS जब भी आपको, तो आपको लाइव सर्वर यूज़ करना ही पड़ता है, तो व्हाट द हेल्प, और वो कैसे हमें हेल्प करेगा, बिकॉज लास्ट डे को आप लोग आपका लैपटॉप लेके आओगे या फिर जो भी लेके आओगे जिस पर आप डेवलप कर रहे हो, एंड आप ही को जो एक्सटर्नल जज होंगे उनको वेबसाइट दिखानी पड़ेगी, एंड उस समय वील बी मेकिंग श्योर कि आपका जो भी कोड है वो लाइव सर्वर पर रन हो, एंड वो आप मोबाइल पे भी देख सके उस समय। और तो दिट्स अ वेरी इजी टास्क, तुम्हारा जो नेट पे कनेक्टेड होगा उसी से तुम डायरेक्टली एक्चुअली शेयर कर सकते हो, तो डोंट वरी मच अबाउट इट, तो वो हम लोग देख लेंगे उस समय, बट या वो देखेंगे, बिकॉज रिस्पॉन्सिवनेस हमें कैसे तो चेक करना पड़ेगा, एंड वो भी नहीं करे तो वी कैन डायरेक्टली चेक इट फ्रॉम द ब्राउजर ऑल्सो। सो रिस्पॉन्सिवनेस विल बी चेक्ड ऑन स्पॉट, वो आप प्लीज़ केयर कीजिएगा। एंड जजिंग क्राइटेरिया, basically these are the 6 known judging criteria other than the code readability, जो भी कोड रिव्यू होगा उस समय होगा, बिकॉज वो अभी आपको रिवील नहीं होगा, वो सिर्फ आपको लास्ट डे रिवील होगा, प्लस 1 क्राइटेरिया जो आपको रिवील होगा दैट विल बी द जजेस क्राइटेरिया। वो जज वहाँ जिस दिन आएगा उस दिन वो क्राइटेरिया
लिखेगा, वो खुद पेपर पे लिखे, विल बी लीविंग अ कॉलम आउट फॉर हिम, एंड वो उसके मार्क्स वो ही डिसाइड करेगा। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज रिस्पॉन्सिवनेस। मैं आपको जितना बोला था कि कोड कितना रिस्पॉन्सिव है। कंटेंट रीडेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, आपकी जो भी कंटेंट डाला हुआ है वेबसाइट पे, इज इट ईजी टू एक्सेस और ईजी टू रीड, कुछ पीछे छुपा नहीं हुआ है, समथिंग इज नॉट हिडन, सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट विजिबल, कुछ ब्लर दिख रहा है, इमेजेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, वो देखा जाएगा। इज योर वेबसाइट परफॉर्मेंट, आपका वेबसाइट जो भी बना हुआ है, इज इट क्या बोलते हैं, स्लो, कहीं पे स्लो लोड हो रहा है, इमेजेस जल्दी लोड नहीं हो रहे, विल बी चेकिंग स्टफ लाइक दैट। हाउ इजी इज टू नेविगेट थ्रू द वेबसाइट एंड उसके डिफरेंट पेजेस जो भी आप बना। इट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट क्रिएट डिफरेंट पेजेस, इफ यू वांट डू अ सिंगल लैंडिंग पेज, तो मैं जैसा चाहिए आप उसके ऊपर ये कर सकते हो। इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, बेसिकली कितनी हम लोग जो बोलते हैं ना, ये वेबसाइट आई कैंडी लग रही है, ओके, सो हाउ इंटरैक्टिव, हाउ लाइक आई जस्ट वांट टू क्लिक ऑन दिस, गो थ्रू इट, वैसा कैसे दिख रहा है। एंड सबसे ज़्यादा पॉइंट्स, आई विल रीड दिस समथिंग दैट आई विल रिवील, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल बी गोइंग टू क्रिएटिविटी, आई नॉट से मोस्ट, बट या क्रिएटिविटी के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे टॉप 5 में से, ओके। एंड अभी आई बी टेकिंग यू थ्रू बेसिकली जो गूगल ड्राइव का लिंक है आपको, या आई बी शोइंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक एक्चुअली बायो में भी है, बायो नहीं सॉरी, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दी हुई है। एंड जो रिसोर्स मटेरियल आपको दिया गया है थ्रू द लिंक्स, ओके। सो आप देखिए कि यहाँ पे डिवाइडेड है। इंस्ट्रक्शन वीडियो, जो पीपीटी मैंने अभी एक्सप्लेन की उसका एक इंस्ट्रक्शन वीडियो भी आपको दे दिया गया है। एंड रूल्स, जो भी रूल्स आपको यहाँ पे हम मैंने बताया वो रूल स्पेसिफिकली मैंने डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पर। तो चैलेंजेस, जो जो चैलेंज हमारा हुआ है उसका रिपोर्ट एंड ये आपको सब यहाँ मिल जाएगा। वीडियो, इमेजेस, जैसा जैसा आपको लगे ज़रूरत है वो सब डेटा आपको वहाँ दे दिया जाएगा। तो इसके बाद इवेंट्स, हमने जितने भी इवेंट्स कवर किए दे आर डिवाइडेड बाय डेट, उनके फ़ोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स जो जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो वहाँ दे दिए गए। अगेन अटेंडेंस वगैरह वो भी आपको ये करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। इवेंट्स, मैंने आपको इवेंट्स दिखाया। कोर के इमेजेस, जो भी हमारे कोर मेंबर्स हैं उनके एक्चुअली इमेजेस नंबर आपको दिए गए हैं, एंड उनका कोर का मैपिंग आपको दिया गया है कि वो कौन से, जो भी इमेजेस का नंबर है वो यहाँ पे होगा, उनका नेम एंड उनका ट्रैक, ये डेटा आपको दिया गया है। ये सिर्फ लीड्स एंड इसके दिए हुए हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी मच अबाउट इट। आपके ऊपर है आप इसे इंक्लूड करो कि नहीं करो, बट जितने ज़्यादा पार्ट्स इंक्लूड होंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बेसिकली वेबसाइट उतना यूजेबल होगा, उतना ज़्यादा फिनिश्ड होगा। एंड मीडिया किट, दिस इज जो भी आपको इंपॉर्टेंट है सबसे फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट। बेसिकली आपको जो भी फॉन्ट यूज़ करना है वो फॉन्ट जो ये गूगल प्रोवाइड करता है बेसिकली, तो हमें अगर कुछ भी डेवलप करना है तो वो फॉन्ट्स यहाँ दिए हुए हैं। यू आर गेटिंग द लोगोज, जो भी लोगोज आपको लगेंगे, आपको डॉट ए आई एंड पी एन जी दोनों दिए हुए हैं। एंड आपको और भी कुछ डेटा लगेगा तो वो दैट इज़ एक्चुअली गिवन इन स्टिकर्स। आपको जो भी यहाँ पे चाहिए, जैसे भी ये चाहिए, दे आर ऑल गिवन टू यू। दी सोर्स, उसके सोर्स फाइल्स भी आपको दिए हुए हैं। एंड बेसिकली आपको जो जो लग सकता है टू क्रिएट जस्ट अ फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट वो पार्ट आपको दिया गया है। अगर किसी को बैक एंड भी ये करना है ही कैन डू दैट, बट उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। एंड आपको रिपोर्ट्स भी दिए गए, एंड दिस इज एंड एक आपको एक जो होता है हम लोग जो बोलते हैं मेन रिपोर्ट, वो मेन रिपोर्ट भी दिया गया है। सो यू कैन गो थ्रू दिस डिपेंडिंग आपको कैसे ये करना है, उसके हिसाब से यू कैन यूज दिस मटेरियल अकॉर्डिंगली टू क्रिएट द वेबसाइट। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। एंड अगर आपको रजिस्टर क्यूआर के थ्रू ही करना है मोबाइल पे, तो यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड और यू कैन गो थ्रू एनी लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपके मेल पे यू कैन इवन यूज दैट लिंक। यू कैन सब सेम ही फॉर्म पे जाते हैं, बट मेक श्योर आप जो भी फॉर्म यूज़ कर रहे हो या जो भी ये यूज़ कर रहे हो, यू आर ओपनिंग इट फ्रॉम द एस आई टी मेल, यू नॉट ओपनिंग इट फ्रॉम एनी अदर मेल, बिकॉज वो ये नहीं होगा, अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू एस आई टी स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग, यू आर ओनली अलाउड टू फिल द फॉर्म वंस। ये हमने जानबूझ के किया हुआ है बिकॉज लोग ट्राई करते हैं टू चीट द सिस्टम, मैंने कॉम्पिटिशन में देखा हुआ है। यू आर ओनली अलाउड टू फिल द फॉर्म वंस, एंड अगर आप कुछ गलती करते हो, मिस्टेक करते हो, यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट भी आपके मेल पे चला गया होगा, और अगर आपको पता है व्हाट्सएप का ग्रुप का भी ये हमने दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड मैं मैन्युअली आपका ये चेंज करूँगा। या तो इसका है, इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, इफ़ यू वांट टू
Ask me anything else, I'll be open to that. या आपको, हाँ, मैं एक चीज़ जो आपको ये नहीं किया हो, आई विल इवन टेक इट, देयर इज समथिंग कॉल्ड लिंक्स. तो बेसिकली लिंक्स में आपको ड्राइव का लिंक तो दिया ही है. हमारा जो एसआईडी का जो वेबसाइट है उस पर जो स्टूडेंट क्लब के बारे में, वहाँ पे भी डेटा आपको मिल जाएगा. आपको जीडीएसई का जो कम्युनिटी डॉट डेवलपर्स का जो पेज है उस पर भी आपको हमारा जो भी लिंक है वो दे दिया गया. आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस दे दी गई है. यू हैव बिन गिवन आर लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया के जो पेजेस है वो आपको दे दिए गए हैं. रेफरेंसेस के लिए यू कैन रेफर टू एनी ऑफ दीज GDSE वेबसाइट्स आर अवेलेबल. बट याद रखिएगा, यू कैन डोंट ट्राई टू कॉपी द स्टाइल एग्जैक्टली. आप खुद से क्रिएटिविटी से कीजिए, आपको उसके लिए ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. बिकॉज वी विल बी चेकिंग ऑल द रेफरेंसेस, विल बी चेकिंग इफ आपने जो भी वेबसाइट ये किया है, बिकॉज देर विल बी समथिंग some kind of a check where we'll be checking if you're copying any kind of a different GDSE website. उसके लिए आपके points डाउन जाएंगे. एंड कॉन्टैक्ट हमारा जो मेल, ऑफिशियल मेल है, उसका कॉन्टैक्ट आपको दे दिया जाएगा. So I'll be staying online for the next 20-30 minutes. I'll be keeping the registration link online. And if you have any questions, if your friends are joining in late, उनको कुछ भी questions होगा and जो वो इससे ये नहीं कर पाए, you can basically ask me right now and मैं वो explain कर दूँगा. And if even if you don't want to do it right now, आपको कल करना है, परसों करना है, the WhatsApp group is going to be open for all this. Anyway, I'm not signing off right now. You can ask me any questions that you want to. All right, and one more thing, until, yeah, the date and time about the final offline event will be sent to you by 4th. जिस दिन सबमिट, जैसे ही सबमिशन लिंक ऑनलाइन जाएगी उसी समय आपको एक्सटर्नल जब भी आने वाले हैं उनका टाइम एंड वेन्यू जो भी होगा. वेन्यू हम लोग यूजुअली नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने आ रहे हैं उसके ऊपर ये करेंगे, बट दैट विल बी सेंट टू यू.
एंड हमारा और एक एक्चुअली पॉडकास्ट होने वाला है. आई थिंक वी आर गोइंग टू मेक आवर पॉडकास्ट weekly or something bi-monthly kind of a thing. So today we are going to have Sairam Aditya and Aradhya Badar on the podcast. We are going to talk mostly about AI. Basically, Sairam is an expert in, what should I say, AI models. I'm not very sure about it because I think it's only pip install. I know it's a very bad take, but yeah. So you can join in. Basically, I'll be attaching the link below too. And the name of the podcast, I've changed it from "It Works on My Machine" specially for this, and I'm gonna call it uh, "It's Not Just Pip Install" because that's what he told me to call it. You can join in, enjoy. जिससे आपको ये करेगा वो आप करेंगे. And if you have any more questions, you can ask it on the chat. I'll be taking the stream offline, but it is going to be remaining public for you guys. And if you still have any questions, you can ask it in the group. And Naito, if you want me to clear it right now, you guys can join on stream. तब तक I'll play non-copyright music because why not? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
All right. So yeah, only the front end website, man. You don't need to create a backend. You don't need to host the website. You need to only create the front end, the UI. Well, I don't know. We can't call it a UI, but yeah, just the front end of the website. जो कैसा दिखेगा, button should work. So no backend, backend hosting वगैरह वो हम लोग देखेंगे. वो भी after the competition. You only have to create the front end. That's it. Yeah, okay. अगर कोई if यही है तो let me open once the लिंक रूल्स वाले डॉक्यूमेंटेशन एंड वहाँ पे आई कैन हेल्प यू बेसिकली. सो सी, high quality front end website, you don't need to create any kind of a backend, and ये rules है utilize any web development framework of your choice, view, angular, html, css वगैरह वगैरह वगैरह. Yeah, no code tools are not permitted. That is the one thing that we have put a strict kind of a no on basically. So yeah, no code tools are not allowed. This is not a designing competition, it's a development competition. And yeah, you need to ensure that the website is responsive across various devices. Code should be prioritize clarity and maintainability because your website, okay, yeah. So जो भी website तुम लोग submit करोगे, even if तुम्हारा one of your website is basically going to be taken in as the official website. Alright, तो हम लोग उससे एक्चुअली होस्ट करेंगे, तुम्हारा नीचे क्रेडिट दिया जाएगा क्रिएटेड बाय दिस गाइड इन दिस कॉम्पिटिशन एंड ऑल ऑफ यू विल बी गिवन सर्टिफिकेट्स. ये होगा तो वट एवर ये होगा, बट या नो होस्टिंग नो बैक एंड, वो तुम्हें नहीं देखना. दैट इज समथिंग दैट वी विल बी डूइंग. So hi guys, let me give you a rundown of whatever went down in the stream. Basically, you need to create a front-end website for GDSE SIT. It is going to be our official page, so you can develop it the way you want. We have provided you with all the resources in the Google Drive folder, and you can basically go and take all the resources that you want and try it. I like this guy. Cool. Okay. So any other rules, any other questions you can ask me. Do join the WhatsApp group. It's gonna be whenever we want to send some kind of an instant update, it's gonna be sent there. So yeah, do check it out. And if you want to register right now and you haven't registered yet, you can just scan this QR code. You will be taken to the registration form, and that can be only be filled once by your college email. Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the नहीं, बेसिकली गिटहब के बारे में तुम्हें जो भी ये हुआ है, यू कैन मेक योर गिटहब. तुम्हें अगर लेट बनाना है लेट बना सकते हो. यू कैन मेक इट अ प्राइवेट रिपोजिटरी अगर तुम्हें आज ही बनाना है, बट यू नीड टू मेक इट पब्लिक द टाइम यू आर सबमिटिंग इट्स लिंक. ओके,
So actually, if you open any kind of a repository, you have a way to convert that private repository into a public repository, and you can do it even afterwards. तुम उसकी link वही रहेगी, it will just change to a public repository. तो तुम्हें हमें you don't need to make us any collaborators or anything. You just need to send us the public link. The repository should be public. And if you guys want any help converting it, तुम्हें setting नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा है, तो ask us in the WhatsApp group. You can message me personally and I can help you with that. मैं तुम्हारे लिए करूँगा नहीं, but I'll certainly guide you into the right direction. And हम लोग public repo ये इसलिए भी मांग रहे हैं. There are actually two reasons why. So तुम्हारे जो गिटहब पे अगर कुछ प्रोजेक्ट नहीं होगा, अगर तुमने अकाउंट भी नहीं बनाया होगा, तो यूजुअली दिस विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. तुम्हारे पास अच्छा एक प्रोजेक्ट गया है विच यू कैन टेक 7 days टू क्रिएट. आज से चालू करोगे, यू विल बी एग्जैक्टली हैविंग 7 days. ओके, वीकेंड पे यू कैन गिव ज़्यादा टाइम इफ़ यू वांट टू. हाँ भाई, तेरे को तो मैं पॉडकास्ट पे पक्का लेके आऊँगा. तेरा पूरा सफ़र पूछना है मेरे को कि कैसे बनाया तूने इतनी सुंदर वेबसाइट. चलो डन, ठीक है, ये करते हैं. पॉडकास्ट पे जो भी विनर्स होंगे तीनों को पॉडकास्ट पे लेके आऊँगा मैं. ओ नहीं, लीड पोजीशन के लिए सी लीड पोजीशन के लिए अगर विनर चाहते हैं, ही कैन डायरेक्टली बिकम द पोजीशन लीड. ओके, बट वी उसके लिए हमें कोड भी तुम्हारा रिव्यू करना पड़ेगा. ओके, तो विनर्स यूजुअली उनका कोड का भी जो ये होगा, कोड का भी हम स्टेट देखेंगे. बिकॉज एंड इफ़ यू वांट टू बी अ लीड, नो इंटरव्यू फॉर द लीड्स. अगर इफ़ यू विन इट एंड यू वांट टू बिकम द लीड, तुम्हारे लिए नो इंटरव्यू विल बी देयर. बट बेसिकली यू हैव टू कमिट टू हैविंग इवेंट्स. बिकॉज तुम जीत रहे हो, इसका मतलब ये है. बट अगर तुम जीत रहे हो तो कैसे बताओ, क्या बोल रहा था मैं भूल गया. लॉल, एक सेकेंड. ओके, इफ़ यू आर विनिंग, तुम डायरेक्टली लीड बन सकते हो, बट यू हैव टू कमिट टू हैविंग इवेंट्स. बिकॉज तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम अच्छी वेबसाइट तुमने डेवलप की है, तो तुम बेसिकली तुम्हें वो नॉलेज जो भी होगा वो बाकी लोगों को इवेंट्स के थ्रू ये करना पड़ेगा. तो तुम्हें उसके लिए भी कमिट करना पड़ेगा. यू कैन बी द लीड विदाउट एनी इंटरव्यू, बट यू नीड टू कमिट टू क्रिएटिंग इवेंट्स. तुम्हें जो भी होगा, बिकॉज तुमने अगर ये किया है तो दैट इज़ वन पार्ट, वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे ये करना है. बट या यू द वेब डेव का जो पोजीशन होगा दैट विल बी ओपन फॉर यू. तुम्हारा जो भी सबमिशन सबमिशन फॉर्म होगा, सबमिशन फॉर्म विल बी सर्कुलेटेड ऑन 4th March. 4th March, एंड वो तुम्हें वाया ईमेल्स एंड जो भी तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप में तुमने हमारा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया उसमें भी आएगा. बट उसमें एक चीज़ होगा, वील बी गिविंग यू एक्सेस टू अ शीट, एक्सेल शीट, जिसमें तुम्हारे नाम के आगे एक नंबर होगा. बेसिकली एन आईडी टू आइडेंटिफाई यू. तो जितने तुम रजिस्ट्रेशन करते जाओगे, यू विल बी गिवन अ यूनिक आईडी ईच वन ऑफ यू. डुप्लीकेट नहीं होगा वो. एंड यू जस्ट हैव टू एंटर दैट आईडी. नेम ईमेल वगैरह भी हम लोग मैच करेंगे, बट दैट आईडी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जिस दिन तुम आने वाले हो, विल बी मार्किंग योर पोजिशन 1 2 3 4 वगैरह 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 थ्रू दैट आईडी. एंड वन थिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉन्क्रीट इज द सबमिशन डेडलाइन. हमारा 11:59, एग्जैक्टली 7th March 11:59 को फॉर्म्स बंद हो जाएंगे. तो मेक श्योर तुम पहले ये करते हो.
I'll be ending the podcast in the next 5 minutes. And so if you guys have any other questions, so कुछ भी ये करना, you can ask me right. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Okay, I'll be stopping this stream right now. Nice meow. Okay, yeah. Anyway, I'll be stopping the stream right now. So let me get you through the crux once more. Basically, WebWeave is a online web development challenge. The whole competition is going to be online, and you have to create a website that basically aligns with GDSA SIT. So that will become our official landing page. All right. And rules are very simple. You can use any coding framework that you want. You can use Vue, Angular, React, HTML, CSS, JavaScript. You can use your tech stack the way you want it. It should be an only front end website. You don't need to work on the back end or hosting. No code tools are not permitted. You need to ensure that the website is responsive. It should be optimal for all screen sizes. Code should prioritize clarity and maintainability for future updates, because your website is actually going to become the official website. So we'll be maintaining it further. You'll be credited for the website, and वो आपके GitHub पे भी रहेगा. And you need to create a public GitHub repository for the final submission. You can, after the competition, you can make it private if you want to, but हाँ, वो repository public रहना चाहिए for the code review. If it's private during the code review, we'll be calling you once. हम लोग आपको एक बार बोलेंगे under an hour get the website public. If you make the website public, we'll be reviewing it or you will be disqualified. And like I said, it's a completely online event except for the last day, that is 9th of March. एक external आएंगे, industry expert आएंगे, he's going to view your website. And उस समय website आपका responsive and ये सब चीज़ check होगा. This is the registration form. The award will be made public
in next 5 minutes, and all the links are which are necessary for the development have been sent to you on your mail or in the WhatsApp group, and you can ask any queries, you can contact me personally. मैंने नंबर मेरा ये किया हुआ है तुम्हारे जो भी फॉर्म आया है उसमें, या फॉर्म के बारे में कुछ चीज़ें, सबमिशन फॉर्म विल बी सेंट टू यू ऑन 4th of March. Submission form is not live right now, only the registration form is live. If you have any other questions, do ask, or I'll be switching off the stream. And one more thing, I'll be stating one more thing. जितने भी registrations होंगे, all of them will be allowed to present their website to the external judge. ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका वेबसाइट बार कर दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल उसका वेबसाइट का कोड हमने रिव्यू नहीं किया हुआ. कोड रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके दो रीजंस होने वाले हैं कि हम लोग तुम्हारा कोड कहीं से प्लेजराइज नहीं है. कोड प्लेजरिज्म मतलब बेसिकली इट इज़ नॉट अ कॉपी ऑफ समबडी एल्सेस वेबसाइट. हम लोग वो चीज़ नोटिस करेंगे. प्रो टिप यूज स्ट्रीमलेट ऑफ कोर्स मैम. सी तुम्हें बाकी जितने भी हैक्स एंड चीट्स यूज़ करना है यू कैन डू दैट. कोडिंग में वो सब चलता है बट वी नॉट अलाउ यू टू यूज़ एनी काइंड ऑफ अ नो कोड टूल. एंड इफ़ यू यूज़ फ्लटर फ्लो ऑल्सो, उसको भी हम लोग इफ़ वी फाइंड आउट यू आर यूजिंग फ्लटर फ्लो, you again some kind of a penalty you will be getting because वो कोड में कन्वर्ट हो जाता है एंड में. बट या we are not looking for that. It's a development competition. Let's go through its spirit. ठीक है. And judging offline होगी. Everybody will be allowed to present their website to the judge. He will be looking at your website. वो कोड उस समय नहीं रिव्यू करेंगे. He'll be only looking at the front end of the website. कोड के तुम्हारे मार्क्स हमने पहले से असाइन कर दिए होंगे. And if you wanna know the judging criteria, this is the 6 judging criteria अभी के लिए जो है, and there will be one surprise judging criteria by the judge. जो भी एक्सटर्नल एक ही एक्सटर्नल आने वाले. ही इज़ एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट. ही इज़ नॉट गोना बी अ फैकल्टी फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट. फैकल्टीज भी प्रॉबली होंगे बट एन एक्सटर्नल जज आ रहे हैं आपका वेबसाइट ये करने के लिए, व्यू करने के लिए, जज करने के लिए. ही विल बी एडिंग वन स्पेशल क्राइटेरिया दैट विल बी अकॉर्डिंग टू हिम एंड वो वही रिवील करेंगे. If you have any other questions, you can ask me, and I'll be ending the stream at 7 exactly. 1 घंटे की stream होने वाली थी, which is kind of a done right now बोल सकते हैं. Yeah. Anyway, if you have any questions you wanna ask me, you can personally message me. I'll get back to you as soon as I see your message. And और group में पूछो. Group में we have multiple admins who can answer your question. One thing which is an unknown right now is कि ऑफलाइन जजिंग सेशन का डेट डिसाइडेड है बट टाइम इज़ नॉट डिसाइडेड. विल बी गेटिंग बैक टू यू विद टाइम एंड वेन्यू एग्जैक्टली आपको बता दिया जाएगा. वेन्यू हम लोग अभी तक नहीं रिवील कर रहे बिकॉज वी सीधे रजिस्ट्रेशंस कितने हो रहे हैं. रजिस्ट्रेशंस के ऊपर वन अप्रॉक्सीमेट ये आपके लिए आपको दिखा अप्रॉक्सीमेट लैब आपके लिए चूज़ किया जाएगा. एंड वन थिंग होगा, यू कैन शो योर वेबसाइट ऑन द कॉलेज का जो भी कंप्यूटर है, यू कैन शो इट ऑन दैट बट इट विल बी प्रेफर्ड इफ़ यू कैरी योर ओन लैपटॉप्स. आपको सब अगर कुछ भी डाउट होगा ये होगा, विल बी क्लैरिफाइंग इट इन द वेब ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. एंड एक चीज़ ये है, जो भी करेंगे आपके SIT से मेल होने वाला है. सो मेक श्योर यू गाइज डू इट ऑनेस्टली. जो भी कॉम्पिटिशन करते हो यू डू इट ऑनेस्टली. यू कीप द स्पिरिट ऑफ द कॉम्पिटिशन इन माइंड बिकॉज देयर इज अ लॉट एट स्टेक हियर. प्राइज मनी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट जो लीड पोजिशन जो यूजुअली लोग people die for this basically. अगर हम लोग if you want to talk figuratively make it, ठीक है. तो if you want the lead position you need to work hard for that. And one more thing, make sure you tell your friends to participate in this because
The competition is going to be, let's make it a good competition guys. एक अच्छा event ये करते हैं because हमारा भी काम हो रहा है, आपका भी काम हो रहा है, बोल सकते हैं. But yeah, so I'll be turning the stream off. Do turn in tonight at 10 p.m. to see me argue with Sairam. It's gonna be a fun thing. Alright, we are gonna have a very cool talk about AI. What are my feelings about it, and especially about how people use Python. Yeah, so anyway, I'll be pushing off right now. Thank you, and if you guys have any questions, put them in the group. I'll look at them. Thank you. Bye bye.